हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनएसएन टेरिस्टी की सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसके कुछ पार्ट रहते थे, तो हम यहाँ से कर लेते हैं कि व्हाट सोशल करेक्टरिस्टिक्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू मगध सक्सेस। जो मगध सक्सेस के अंदर कौन से एक सोशल करेक्टर थे जो उसको सक्सेस में कंट्रीब्यूट दो। मैम ने कल पढ़ा था कि अनऑर्थोडॉक्स थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, वो किसी चीज़ से स्टिक नहीं थे। एथिकली मिक्स सोसाइटी थी, मतलब डिफरेंट धर्मों के लोग या डिफरेंट सोसाइटी रहते थे, मतलब मिक्सचर था। तो इसलिए ज़्यादा वो मतलब एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं था, मतलब जैसे ये नहीं कहते कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी या ये थी, तो मिक्सचर था। वाई डिड मगध शो ग्रेटर इंथुसियम फॉर एक्सपेंशन देन मैनी अदर किंगडम। जो मगध का इतना ग्रेट मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंशन क्यों हुआ अदर के बजाय, क्योंकि दीज आर रिसेंटली हैज बीन वेदिसाइज्ड, तो वैदिक साइज थी ये, ठीक है। विच रीजन ऑफ द इंडिया रिमेन पोलिटिकली फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। कौन सा, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पोलिटिकली कौन सा रीजन फ्रेगमेंट हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रेगमेंट हुआ। 3 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपलिटीज थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेंशन इन द टेक्स्ट, तो कंबोज, गांधार एंड मद्रास। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज प्रिंसिपलिटीज, ठीक है। जो वाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया वनरेबल टू फॉरेन इन्वेजन। नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्यों वनरेबल था नॉर्थ वेस्ट इन्वेजन के लिए? पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, इजी एक्सेस था थ्रू हिंदू कुश पासिस, ठीक है। हिंदू कुश पासिस के थ्रू इजीली एंटर किया जा सकता था। और जो उस रीजन में थी वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी, पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, मतलब कोई एक दूसरे के साथ मतलब यूनिटी के साथ नहीं था, इसलिए कोई भी इन्वेजन हो सकता था तो आसानी से, मतलब एक रीजन में यदि आपके रीजन में कोई इन्वेजन नहीं हुआ तो दूसरे के रीजन में हुआ है तो आप उसमें उसको हेल्प नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आसानी से बाहर का इन्वेजन कर पा रहा था। विच माउंटेन पास प्रोवाइडेड एसेक्स टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो जो सेंट्रल एशिया से जो इन्वेजन होता था, जैसे टर्किस आते थे, ठीक है, अफगानीज आते थे, तो वो हिंदू कुछ पासिस से आते थे। विच ईरानियन डायनेस्टी इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो एचमेनियन, तो एकमेडियन बोलते हैं इसको डायनेस्टी को। जो विच पर्शियन रूलर फर्स्ट इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो डेरिस द ग्रेट पर्शियन था, ठीक है। इन विच ईयर द डेरिस इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो 516 BC में। विच रीजन वर एनेक्स्ड बाय डेरिस, तो पंजाब, वेस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब एंड सिंध को एनेक्स कर लेता डेरिस ने। और डेरिस कहाँ से आया था? पर्शिया से। पर्शिया क्या है? पर्शिया ईरान था, ठीक है। वर कन्क्योर्ड बाय इंडियन टेरिटरी इन विच सत्रपी होता है टेरिटरी, आपने पहले ही पढ़ा हुआ, तो ये 20th सत्रपी थी इंडियन टेरिटरी। हाउ मैनी सत्रपीज डिड एचमेडियन एम्पायर हैव, तो 28 टेरिटरी थी उनके पास, एचमेनिड। विच रीजन फॉर्म द इंडियन सत्रपी, तो सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड वेस्टर्न पंजाब। विच ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड पॉपुलस सत्रपी, जो रीजन था वो पर्शियन एम्पायर का, तो इंडियन सत्रपी था, इंडियन पर्शियन। हाउ मच ट्रिब्यूट डिड द इंडियन सत्रपी पे टू पर्शियन ये एम्पायर, तो 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड। What proportion of Asian provincial revenue come from India सत्रपी, तो 1/3। जो एशियन प्रोविंस थे रेवेन्यू आता था इंडियन सत्रपी को 1/3 आता था, ठीक है। विच पर्शियन रूलर सक्सीडेड डेरिस, तो सर्शस था पर्शियन रूलर जिसने डेरिस को सक्सेस कर लिया, वो सर्शस था। और हुज आर्मी डिड इंडियन सर्व ड्यूरिंग द पर्शियन ग्रीक वॉर, तो सर्शस पर्शियन आर्मी थी। Until whose invasion did part of northwest India remain under Persian control, Alexander the Great. Approximately how long did the Indo-Iranian contact last? About 200 years. What was the major economic impact of Indo-Iranian contact? It promoted Indo-Iranian trade and commerce. Which impact of Indo-Iranian contact was considered more significant than economic impact, or cultural impact? Which script was introduced into India by Iranian scribes, तो क्रॉस स्टिच स्क्रिप्ट में था जो इंडियन ईरानी स्क्राइब्स थे। इन विच डायरेक्शन वाज द क्रॉस स्टिच स्क्रिप्ट रिटन, तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होता था, राइट टू लेफ्ट।
Which language has the same writing direction of cross T? तो Arabic भी right to left थी. In which region of India were some of the Ashoka inscription written in cross T? Northwest India में. Until which country AD did the cross T script remain in use? 3rd century AD के अंदर जो cross T script थी remain in use रहा. Which emperor monuments show the clear Iranian influence? तो अशोका के emperor मोनूमेंट मिलते थे जो ईरानी इन्फ्लुएंस को दर्शाते थे. विच फीचर ऑफ अशोकन पिलर रिफ्लेक्ट इरानियन इन्फ्लुएंस? बेल शेप्ड कैपिटल. विच इरानियन वर्ड्स कोरस्पॉन्ड ऑफ अशोकन टर्म लिपि? तो दीपी बोलते हैं उसको. ठीक है. थ्रू होम डिड द ग्रीक लर्न अबाउट इंडियाज इमेंस वेल्थ? द इरानियन. थ्रू होम डिड द ग्रीक लर्न इंडिया इमेंस वेल्थ? तो इरानियन के थ्रू उन्होंने सीखा. कौन सा इवेंट था इंक्रीज करता है ग्रीक को नॉलेज ऑफ इंडिया वेल्थ? तो अलेक्जेंडर इन्वेजन ने वेल्थ के बारे में बताया इंडिया के अंदर कितनी वेल्थ है. इन विच सेंचुरी बीसी अलेक्जेंडर इन्वेड? तो 4th century बीसी में. हु लेड द ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया. विच एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय अलेक्जेंडर बिफोर इन्वेडिंग इंडिया? तो ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने. विच रीजन डिड अलेक्जेंडर कन्क्वर बिफोर एंटरिंग इंडिया? एशिया माइनर, इराक एंड ईरान. विच ग्रीक हिस्टोरियन इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस. हेरोडोटस को हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है. व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया का इमेंस वेल्थ को कैप्चर कराना? विच जियोग्राफिकल मिसकंसेप्शन इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर एक्सपीडिशन? कैस्पियन सी ले टू ईस्ट ऑफ इंडिया. द कैस्पियन सी से ईस्ट ऑफ इंडिया. वाई वॉज द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ईजी फॉर अलेक्जेंडर टू कन्क्वर? पॉलिटिकली डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम एंड रिपब्लिक्स. विच वर रूलर ऑफ तक्षशिला अलाइड विद अलेक्जेंडर? ओम्पी बोलते हैं इसको. ठीक है. विच इंडियन किंग फोर्ट अलेक्जेंडर ऑन द बैंक ऑफ झेलम? तो पोरस ने बैंक ऑफ झेलम में लड़ा था, तो बाद में उसकी फाइट को देख के उन्होंने उसको राज्य दे भी दिया था. तो 2 रिवर किंगडम ऑफ पोरस सिचुएटेड झेलम एंड चेनाब. विच इम्पोर्टेंट माउंटेन पास रिमेन अनगार्डेड ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन? तो खाइबर पास अनगार्डेड थे, उस पर कोई सुरक्षा नहीं थी. वाई कुड एम्बी पोरस नॉट स्टॉप द अलेक्जेंडर एडवांस? दे फेल टू फॉर्म यूनाइटेड फ्रंट. Which factor most contribute to Alexander's success in northwest India? Political disunity among the Indian states. In which year did Alexander invade India? 3 to 6 BC. Through which pass did Alexander enter India? Khyber Pass. From which city did Alexander march to India? Kabul. How long did Alexander take to reach the Indus after entering India? 5 months लगे इंडस तक पहुँचते. Which ruler of Takshila submitted Alexander without resistance? Ambi. On the bank of which river Alexander fight Porus? तो झेलम रहा. हाइडास्पीस रिवर बोल देते हैं. Which Indian king offered stronger resistance to Porus? Why did Alexander restore Porus kingdom after defeating him? He was impressed by Porus' bravery, made him his ally. अब टू विच रिवर डिड अलेक्जेंडर एडवांस इंडिया? तो बेस रिवर तक. हाइपासिस रिवर बोलते हैं बेस. वाई डिड अलेक्जेंडर फेल टू एडवांस बियॉन्ड द बेस रिवर? हिज सोल्जर रिफ्यूज टू मूव फर्दर. नेम द 2 मेजर रीजन फॉर म्यूटिनिटी ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी? वार वियरनेस, होम सिकनेस, ऑल्सो फियर ऑफ पावरफुल नॉन बैलेंस्ड आर्मी. विच ग्रीक हिस्टोरियन प्रेज द मिलिट्री क्वालिटी ऑफ इंडियंस? आर्यन. Which kingdom of the Ganga frightened Alexander's soldier? Magad under the Nand. Which dynasty ruled Magad during Alexander's invasion? The Nanda dynasty. Approximately how long did Alexander remain in India? About 19 months. What did Alexander do with most of the conquered Indian states? Restore them to their ruler after they accept his authority. Into how many administrative divisions were Alexander Indian territory divided? 3. Who governed Alexander Indian territory? 3 Greek governors.
Why did Alexander establish several cities in conquered region? To maintain Greek control and power. What was the most important historical significance of Alexander invasion? It established the first direct contact between ancient Europe and South Asia. Was Alexander Indian campaign considered successful? Yes, it was military success, though he could not advance into Magad. Which Indian ruler army ultimately prevented Alexander from advancing further east? Nanda, ruler of Magad. What was the most important outcome of Alexander invasion of India? Establishment of direct contact between India and Greece. How many major routes between India and West were opened by Alexander campaign? 4 routes. By land and sea 4 routes. Which sector benefit from the opening of these routes? Trade, commerce and craftsmanship. Which Greek settlement became important after Alexander invasion? Alexandria, Bokfela, Alexandria, Kabul, Jhelum and Sindh. Under which Mauryan ruler did Greek continue to live in northwest India? Chandragupta Maurya and Asoka. These are the Mauryan rulers who Greek continue to live in northwest India. Asoka. Which Greek admiral explored the sea route from Indus to Euphrates? Nearchus. Which river marked the route explored by Nearchus from the Indus to the Euphrates? What valuable contribution did Alexander historian make the Indian history? They left detailed geographical account and dated historical record. Why was Alexander record important for Indian chronology? They help establish chronology of subsequent historical events. Which social practices in ancient India is mentioned by Alexander historian? Sati. Which social evil mentioned by Greek writer involved in poor parents, sale of girl in marketplace? Which animal from northwest India was highly praised by Greek? Oxen. Approximately how many oxen did Alexander send to Macedonia? 2 lakh oxen. Which craft is described as most flourished in ancient carpentry? What did Indian carpenter mainly manufacture? Chariots, boat and ship. How did Alexander invasion help the rise of Mauryan Empire? It destroyed many petty states in northwest India, easing Mauryan expansion. According to tradition, which Mauryan ruler absorbed Alexander's military system? Chandragupta Maurya. Against which dynasty did Chandragupta Maurya use military knowledge gained from Alexander campaign? Nanda dynasty. Which empire soon recovered from Greek possession in India? Mauryan Empire. What was the long-term political significance of Alexander invasion? It paved the way for establishment and expansion of Mauryan Empire. These are all about the question from the ancient history. I hope you understand the ऑनलाइन क्वेश्चन. और आप इसकी जो PDF है वो YouTube के मेन चैनल पे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.